All right, we see politics over pollution in the national capital. That still continues on day 2, right after Diwali celebrations. Pollution in many parts of the state has peaked. Aam Aadmi Party's Environment Minister Gopal Rai, the Environment Minister to Delhi, levels a massive allegation on the BJP instead. Says the BJP is provoking people to burst firecrackers. No Diwali, but BJP forced cracker bursting. This is Gopal Rai saying that it's about how party leaders from the BJP instigated the crowds to go ahead and burst firecrackers, and that's what's led to this kind of pollution levels. He says that stubble burning has reduced largely by at least 60% in Punjab. Basically shifting the blame entirely on firecrackers that were burst in Diwali in the last 2 days that's led to its pollution peak in the state. Let's have a listen as he speaks exclusively to India Today's Amit Bharadwaj. सीपीसीबी का डेटा देख लीजिए, उस पे लाल निशान लगा हुआ है और इसी बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच एक तरह से पोल्यूशन पे राजनीति चल रही है। वो कह रहे हैं आप सनातन विरोधी थे, इसलिए आप लोगों ने पटाखों पर बैन लगाया और पराली पंजाब में जल रही है प्रदूषण उसकी वजह से। देखिए, ऐसा है कि चश्मे का जो दो तरह का होता है, एक दूर का दिखता है, एक पास का दिखता है। आप कौन सा चश्मा लगाए हुए हैं इससे वो चीज़ नज़र आती है। दिल्ली के अंदर ये तो सबने, मीडिया ने, सबने देखा कि दिवाली के दिन बारिश और हवा की गति तेज होने से दिवाली के दिन प्रदूषण का स्तर लगभग 200 के आसपास था। ये छुपी हुई बात तो नहीं है। पंजाब भी था, सब कुछ था, गाड़ियां भी चल रही थी, सब कुछ था। उसके बाद प्रदूषण का स्तर दिवाली के दिन 200 था, अगले दिन 350 हुआ। ये सबने जो है महसूस किया कि रात में पटाखे जलाए गए दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, और जैसी उम्मीद थी कि पटाखे जलेंगे तो प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, प्रदूषण का स्तर बढ़ा। अब उसमें जो दिवाली के अगले दिन अगर हवा की गति तेज होती, जिसका अनुमान था पहले से कि हवा जो है गति धीमी होने वाली है, तो शायद ये पोल्यूशन भी डिस्पर्स हो गया होता। लेकिन जब हवा की गति रुक गई तो जो भी पोल्यूशन उस दिन हुआ वो स्टोर हो गया और अब एक स्मॉग की स्थिति फिर बन गई। अब भारतीय जनता पार्टी के मैं नेताओं के कल बयान देख रहा था। अपनी गलती को छुपाने के लिए बहुत सारे तर्क गढ़े गए जिनका कोई सिर पैर नहीं है। एक नेता ने बधाई दी, दिल्ली वालों को पटाखा जलाने के लिए बधाई। मतलब पटाखा तो जलवाया उन्होंने और उनको खुशी है कि पटाखा जलाए गए, प्रदूषण बढ़ाया गया। क्यों? क्योंकि केजरीवाल जी को गाली देने का मौका मिल जाएगा। दूसरे नेता ने कहा जी कि 10 दिन पहले तो प्रदूषण इससे ज्यादा था, तो 10 दिन पहले प्रदूषण ज्यादा था इसलिए पटाखा जलवाने की आपको छूट मिल गई। 10 दिन पहले प्रदूषण था तो हवा प्रदूषण दिवाली के दिन तो कम हुआ था, फिर आपने बढ़ा दिया और आप खुश हैं कि प्रदूषण हमने बढ़ा दिया। वाह वाह। That's that exclusive conversation that the Environment Minister of Delhi has had with India Today, shifting the blame on the BJP. We see clearly that politics now peaks over the pollution levels currently that persist in the national capital. Many areas, it's in the hazardous levels. The air quality index has deteriorated drastically post-Diwali. In fact, the NCR region is supposed to be the worst hit. Now, this has triggered a political battle over pollution levels. Aam Aadmi Party's BJP and the AAP basically at loggerheads at this point over the Delhi smog owing to Diwali, pinning the blame on one another. BJP claiming that it's insulting that the AAP is blaming a Hindu festival of contributing to pollution. Meanwhile, stubble burning in parts of Punjab and Haryana continue to raise concerns for Delhiites. As the political blame game continues, it's learned that nearly 7 years after the Delhi government, following the apex court's orders, began levying an environmental compensation charge on all commercial vehicles entering the National Capital Territory to address the problem of air pollution. And significant portion of that collected funds has been remained untouched. In fact, toxic froth was seen floating on the surface of the Yamuna River, indicating the peak of pollution in the National Capital Region. Could those funds have been used for or dispersed for better utility? Could there be more efforts to have by the Aam Aadmi Party government to bring down pollution levels in a staggered manner, using those very funds that they collected as fines? Well, it's only for the Aam Aadmi Party to respond.
आज कल की अपेक्षा आज AQI का स्तर बढ़ा है। तो अब ऐसे में आज से हम लोग वाटर स्प्रिंकलिंग पे जो है वो फोकस कर रहे हैं। अभी हम लोग जो है आज से 12 बजे इसके लिए एक अभियान शुरू करेंगे, जिससे कि कम से कम अब बारिश की स्थिति नहीं है तो लोकल लेवल पे जो है जहां जरूरी है वहां पे वाटर स्प्रिंकलिंग को तेज किया जाए। कभी ऑड इवन, कभी स्मोक टावर, वो भी 8 महीने से बंद था। कभी और किसी पर दोष डालना, हिंदुओं पर, दिवाली पर, यूपी पर, हरियाणा पर, केंद्र पर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाना। अब बताइए सारे बुद्धिजीवी मिलकर कि आज AQI 450 तक क्यों जा रहा है और 2600 से ज्यादा पंजाब में पराली जल रही है अभी भी सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंध लगाने के बाद। ये क्यों हो रहा है? और जो 10 दिन पहले प्रदूषण था, AQI 600 पार था और 10 दिन आगे भी होगा, तो उसके लिए भी दिवाली जिम्मेदार है, उसके लिए भी फायर क्रैकर जिम्मेदार। सबसे महत्वपूर्ण है कि मास्क लगाएं। जो सिंपल मास्क है उससे काफ़ी जो PM 2.5 पार्टिकल हैं, PM 10 पार्टिकल हैं, उनसे बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो टॉक्सिक एयर है उससे भी थोड़ा राहत मिलती है। तो मास्क जरूर लगाएं, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलें, और यदि आपको सांस में तकलीफ है, ब्रेथलेसनेस है, बहुत ज़्यादा आपको घुटन महसूस हो रही है, तो तुरंत आप डॉक्टर से सलाह लीजिए। ये बहुत ख़तरनाक है, ये हर एक को इफ़ेक्ट कर सकता है। कुछ लोग जो वल्नरेबल हैं उनको ज़्यादा जल्दी इफ़ेक्ट कर सकता है, जैसे जो एल्डरली लोग हैं, बहुत छोटे बच्चे हैं, जिन लोगों को क्रॉनिक लंग डिजीज़ हैं, क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ हैं, इन लोगों में ये जो है ना पोल्यूशन की वजह से फ्लेयर अप हो जाती हैं प्रॉब्लम्स, कि पता चला सांस थी एकदम से उखड़ गई, सांस लेने में दिक्कत आ गई, राइट, खांसी है रुकी नहीं रही। बट इनके अलावा हर आदमी को असर हो सकता है। All right, let me cut across to Piyush Mishra joining us, our correspondent. Piyush, go on. We see the Delhi government now as is receiving a lot of criticism over not handling pollution crisis effectively. But here we see political blame game playing out. And what's more important is that the Delhi government certainly could have done a lot more. There's large amounts of funds that they've gathered through fines, or basically commercial vehicles entering Delhi. They were collected a certain fee, an environment fee, as a bit of a tax rather, that was levied on many commercial vehicles, or all commercial vehicles entering Delhi, so that they're deterred from actually coming into the national capital due to pollution levels. That money has been untouched. What's the Delhi government saying about that? Well, absolutely, that money is untouched. And when we asked questions from Delhi government officials about that, they are saying that as of now, they are trying their best to utilize that fund too. But the allegations which they are facing is that even as they were able to collect a huge amount of fund, they did not spend it in adopting the measures to curb the pollution in national capital. But the politics continue to take place. At one side, people of Delhi are reeling under the pollution in the national capital. On the other side, BJP, Aam Aadmi Party, as well as Congress Party, all the political parties in Delhi are indulged in blame game. Once again, today, Gopal Rai has said that the pollution in Delhi has increased because BJP has incited people of Delhi to burst crackers in large number. On the other hand, mount pressure for the government, asking as to what steps the party which has its government in Punjab has taken to stop the stubble burning. In fact, BJP is also coming out with the data saying that in the last 24 hours, out of 1,400 stubble burning cases, around 900 have been reported from Punjab only. So that's what is happening in Delhi. There are some measures those have now been taken by the Delhi government. Today, what we are given to understand is that the Delhi government is going to continue with GRAP 4, which is implemented in Delhi, and also they are trying their best to sprinkle water so that pollution can be curbed. In fact, NDMC has also doubled its parking fee so that the people are discouraged to use the private vehicle and they opt more for public transport. We have to wait and watch what more measures the government is further going to take as the pollution level continues to rise in Delhi. Today itself, it has breached the mark of 350, and Delhi government has said that if it breaches the mark of 450, then it will consider the option of implementing audit. Well, it's for the Delhi government to respond to why funds that were kept with them
to really improve the situation of pollution in the state was left unused. In fact, if I could give our viewers a quick glimpse into the areas where funds were accumulated, or rather fines were taken in terms of tax, many of the commercial vehicles were taxed, those who were coming into Delhi, but that fund remains untouched. It's unused for years now, 7 years since they started collecting that tax from commercial vehicles, and it accumulated to 1,464 crores. That's a big sum that large amounts of it, large chunks of it, still is untouched by the Delhi government. We see that in 2019, they had collected 265 crores from the Delhi Meerut Rapid Transit System. And then in 2020, about 9 crores from the IOC HCNG project. And then in 2023, 500 crores, the NCR Transport Corporation. So basically, this money out of the 1,464 crores, this was used for money was used for basically these 3 projects. What was left off, 682 crores, it's still, even as I speak till date, untouched. The question here is, could they have redirected this money to come up with solutions to tackle the raising pollution levels in the state of Delhi? Well, we're waiting for answers on that. But in the meanwhile, we see the BJP and Aam Aadmi Party locking horns over pollution levels. It's sad that it's the common man, the common citizen, having to choke in this Delhi pollution. It's now been weeks that the capital of Delhi is fighting pollution levels due to parali burning and now with Diwali firecrackers, despite the Supreme Court's ban. Let's have a look. A brazen defiance of the country's Supreme Court. Law enforcement falls short in enforcing the Diwali fireworks ban. Once again, the nation's capital transforms into a smoke chamber. A brief break from suffocating pollution due to rain dissipates into thin air once more. The Delhi government pointed fingers at the BJP for the sudden surge, accusing the Saffron Party of endorsing firecracker celebrations while the city grapples with hazardous air quality. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता सवाल उठा रहे हैं तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट के अगर आदेश की भी धज्जियां भारतीय जनता पार्टी ने उठाने की ठान ली है और लोगों की जिंदगी को संकट में डालने की ठान ली है, तो फिर तो अब उसके आगे तो कोई सवाल नहीं बनता है। The AAP's assertion sparked a political firestorm as a lineup of BJP leaders launched a coordinated offensive against the Aam Aadmi Party, alleging it to be anti-Hindu. बीजेपी संस्कृति को होने देना चाहती है, पर्व त्योहारों को होने देना चाहती है। हमें दर्द है कि पटाखे नहीं बजाने को मिल रहे हैं दिल्ली में, क्योंकि पोल्यूशन कारण है, मगर मैं सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन इनकी जो मनसा है वो तो ऐसी है कि दिवाली ही न मने लोगों की। एक हफ्ते पहले जो पोल्यूशन के कारण थे उनके ऊपर आप काम नहीं कर रहे, लेकिन आप ठीकरा फोड़ना चाहते हैं बच्चों के पटाखों के ऊपर, हिंदुओं के त्योहार के ऊपर। साइंस की रिपोर्ट देखिए, IIT की रिपोर्ट देखिए, पोल्यूशन के जिम्मेदार क्या है, और पराली जहां आपकी सरकार है वहां पर उसके ऊपर आपने कोई काम नहीं किया। कितना आपके मन में जहर भरा हुआ है कि कोई समुदाय अगर अपना पर्व मनाता है तो उसी पर दोष डाल दो, दिवाली के ऊपर ही दोष डाल दो पूरे प्रदूषण का। और 15 दिन पहले क्या हो रहा था उसका कोई जवाब नहीं। अब 10 दिन बाद जो प्रदूषण होता रहेगा उसके लिए भी दिवाली जिम्मेदार है, उसके लिए भी फटाके जिम्मेदार है। Meanwhile, Congress pointed out that the ban on fireworks was disregarded even in the VVIP zones of the city on Diwali night. Even in Lutyens, Delhi, that is where the Supreme Court is, you had firecrackers going off till 2 a.m. in the morning. Every restriction was flouted with impunity. Assam's chief minister endorsed fireworks as an integral part of the Diwali festivities. Beyond the political rhetoric, scientific evidence revealed how fireworks instantly escalated pollution levels in different parts of Delhi. A pressing question remains unanswered. How is it that law enforcement struggled to enforce a court-ordered ban, allowing these hazardous celebrations to persist? Bureau Report, India Today.